नमस्कार, सुप्रभात। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्विमिंग पूल राजकोट से मैं कुलविंदर सिंह कंग अपने साथी कमेंटेटर मिलिंद वागले और भरत सचदेवा के साथ सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज महिलाओं की 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड का फाइनल मुकाबला स्विमिंग पूल में इस समय थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है और कुल 10 प्रतिभागी हैं, जिसमें कर्नाटका की रुतुजा पवार लेन नंबर 2 में यानी कि नंबर 2 पर आएंगी शाकेना जे राव ऑफ कर्नाटका, आशना चेवली गुजरात, स्मिता महाजन बंगाल, मेधाली रेडकर महाराष्ट्र, मृदुला तमिलनाडु से, भविका पिंगले मध्य प्रदेश से, स्नेहा पॉल बंगाल से, ऋतुका श्रीराम महाराष्ट्र से और पलक शर्मा मध्य प्रदेश से। महिलाओं की 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड का ये फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। ये आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले रुतुजा पवार कर्नाटका, ये आज अटेम्प्ट करेंगी 103 फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट यानी कि डेढ़ कलाबाजी खाएंगी बी पाइक पोजीशन पे, जिसमें कि हिप को बेंड करके रखना होता है। बहुत खुश है दर्शक यहां जो बैठे हैं मेरे आसपास और बहुत अच्छा मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। तैयार है इस वक्त रुतुजा पवार आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये आज के पहले डाइवर तैयार। ठीक ठाक उन्होंने जो डाइव लगाया, स्प्रिंग ज्यादा नहीं ले पाई, इसमें स्प्रिंग लेना होता है। आप देखिए फलक्रम से उसको एडजस्ट किया जाता है, आप कितना आप उसमें जंप लेना चाहते हैं, स्प्रिंग लेना चाहते हैं। लगभग 4.5 के आसपास है। उन्होंने थोड़ा ऊंचा अब नेक्स्ट शकन्या राव कर्नाटक से ये 103 बी पाइक पोजीशन पर करेंगे। इन्होंने फलक्रम को एडजस्ट किया ताकि ज्यादा उनको स्प्रिंग मिल सके। आपकी स्क्रीन के ऊपर शकन्या राव ऑफ कर्नाटका तैयार। बहुत संयमित होकर करना पड़ता है। आज के 5 जजेज हैं, ज्यादा ये भी इतना नहीं ले पाई हाइट, लेकिन फिर भी पहले वाले के मुकाबले डाइव बिल्कुल सही थी उनकी। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 4 and 4.5। नंबर 1 रुतुजा पवार से कुछ ज्यादा अंक इनको मिले हैं और अब नंबर 3 पर डाइव के लिए आई हैं आशना चेवली ऑफ गुजरात। रिवर्स डाइव लगाएंगी बी पाइक पोजीशन पर, रिवर्स होगा। गुजरात की लोकल गर्ल है। महिलाओं के 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्विमिंग पूल राजकोट में 36वें राष्ट्रीय खेलों का ये डाइविंग मुकाबला। और अब ये आशना चेवली काफी अच्छा जंप ले, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने रिवर्स डाइव किया। उन्होंने हिप को बेंड किया, साथ में आप दोनों हाथों को अपने पैरों के साथ जोड़ा और शानदार तरीके से उन्होंने और इनको अंक भी अच्छे मिले हैं। अब चौथे स्थान पर स्मिता महाजन बंगाल से हैं, 103 बी पोजीशन इन फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट 1.5 समरसॉल्ट। स्मिता महाजन आज की चौथी डाइवर। महिलाओं की 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड और संभवतः ये पोडियम फिनिश करेंगी, पदक की बहुत बड़ी दावेदार स्मिता महाजन ऑफ बंगाल। बहुत अच्छा, बिल्कुल सीधा। आप ये देखिए, अब आप रिप्ले में देखेंगे कितना खूबसूरत तरीके से स्मिता महाजन ने डाइव लगाया। 5, 5.5, ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से 5.5 और 5। बिल्कुल जब आप पानी में एंटर करते हैं दोनों हाथ आपके जुड़े होने चाहिए और दोनों पैर आपके खुले हुए नहीं होने चाहिए, पैर जुड़े होने चाहिए। और वैसा ही ये डाइव था स्मिता महाजन का। अब मेधाली रेडकर ऑफ महाराष्ट्र फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट बी पाइक पोजीशन पर, आपकी स्क्रीन पर मेधाली रेडकर। बहुत अच्छा, उसी तरह से जिस तरह से स्मिता महाजन ने किया उसी तरीके से अंडर वाटर का भी आप देखिए इफेक्ट यहां पर बहुत अच्छा। पहली बार पहले डाइवर हैं, ये 5वें डाइवर थे जिनको 6 अंक भी मिले हैं।
6, 6, 6.5, 6 और 5.5। और अब मृदुला तमिलनाडु से 103 सी पोजीशन, टक पोजीशन, फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट। थोड़ा सा बैंड कर गई, थोड़ा सा ज्यादा अच्छी ये डाइव नहीं कही जाएगी, ज्यादा स्प्रिंग भी नहीं लिया। 3.5, 4, 3.5। ये देखिए थोड़ा सा बॉडी को सीधा नहीं रख पाई, पैर पीछे की तरफ रह गए। और अब भाविका पिंगल मध्य प्रदेश से, पिंगले, भाविका पिंगले 203 सी यानी कि बैक 1.5 समरसॉल्ट, सी टक पोजीशन पर। ये देखिए इस समय बैक 1.5 समरसॉल्ट के लिए तैयार। 1.5 कलाबाजी खाएंगी भाविका पिंगले। स्प्रिंग लेती हुई बोर्ड पर, जितना ज्यादा स्प्रिंग चाहिए आप फल क्रम से एडजस्ट कर सकते हैं। समय लेती हुई बहुत अच्छी डाइव कही जाएगी भाविका पिंगले की, जो कि मध्य प्रदेश से है। 3, 4.5, 4, 4 और 4.5। ये देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा जो उनके पांव थे पानी में एंट्री के वक्त बिल्कुल सीधे नहीं हो पाए, थोड़ा सा पीछे की तरफ रहे। पानी में एंट्री सही नहीं थी, पानी का स्प्लैश भी नहीं होना चाहिए। और अब स्नेहा पॉल ऑफ बंगाल फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट, बी पाइक पोजीशन पे 103। ये थोड़ा सा उनके जो पांव थे उसी तरीके से पीछे रहे। स्नेहा पॉल बंगाल 5.5, 4.5, 5, 5, 5। ये देखिए, लेकिन पानी में एंट्री बहुत अच्छी थी, स्प्लैश भी कम हुआ पानी का। रुतिका श्रीराम इनवर्ड 1.5 समरसॉल्ट, सी टक पोजीशन, महाराष्ट्र की रुतिका श्रीराम। और ये मेडल की खास तौर पर कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक की दावेदार मानी जा रही है रुतिका श्रीराम ऑफ महाराष्ट्र। तैयार, बिल्कुल बोर्ड के कॉर्नर पर खड़ी है। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया जिसको कहा जाएगा। इनवर्ड 1.5 समरसॉल्ट, थोड़ा सा 5.5। हाँ, पैरों में थोड़ा गैप था। जब आप पानी में एंटर होते हैं तो दोनों आपके पांव जुड़े हुए होने चाहिए। और आज फर्स्ट राउंड की पलक शर्मा 10वीं और आखिरी कंटेंडर फर्स्ट राउंड में, मध्य प्रदेश की, फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट, बी पाइक पोजीशन 103। पलक आपकी स्क्रीन पर। लेकिन एक बार फिर से अच्छी डाइव कही जाएगी। थोड़ा सा पानी में एंटर होने के बाद जो पैर सीधे रहने चाहिए वो नहीं रहे। 4.5, 5। ये देखिए 5, 4.5, 4.5। और ये पहले राउंड में महिलाओं की 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में पहला राउंड समाप्त हुआ। माइक्रोफोन पर अब अंग्रेजी में मेरे साथी मिलिंद वागले। Thank you, Kulvinder Kang. Up now to the second round of the 1 meter springboard for women at the 36th National Games here in the wonderful city of Rajkot. We're now looking at Rutuja Pawar attempting the back 1.5 somersault. There are 4 basic parts to a dive and we'll talk about them through the divers. She had a couple of 4s and 4.5s to start off with, but I suspect that the contenders at this stage are Ashna Chevli, Ishpita Mahajan, Medhali Redkar and Rutika Sriram. She's been amongst the 4s now, staying somewhere there. Sakanya Rao of Karnataka, again the 4.5s and a 5 to start off with. Look at the approach to the dive. The forward steps which you're now going to watch, taken by this girl, Sakanya Rao, usually involves 3 or more steps to start off with. And the diver's starting position has to be erect. That's important. Has to be erect. And the arms which you just watched
straight forward to the side or over the head. And the judges, remember, are looking for the approach to the end of the board. She's done well here. 1-6, a couple of 5.5s puts her definitely back in the hunt for a podium. The local girl, Ashna Chevli, represent Gujarat. Forward somersault, one twist. The takeoff, and watch that again. After the approach to the dive, it's the takeoff. The diver will hop or spring to the end of the board, then take off from 1 foot and land on the 2 feet, and then departing from the board. The important aspect is that the takeoff has to be clear the board by a certain safety margin. Forward somersault, one twist. Flawless execution. She's got a good 5.5 to start off with. Hasn't impressed the third judge, who said, I'll give you only 4. Ipsita Mahajan of Bengal, attempting an inward 1.5 somersault. She's been amongst the 5s with 3 5.5s. The carrying out of the dive, where you'll watch her looking to exhibit proper technique and the grace as you'll glide into the water. And the execution, the component has to be performed with control and held long enough for the judges to clearly identify them. It's hotting up here. It's a wonderful morning, slightly warm, but the blue waters of the pool, well, she's not good enough. She slipped from the 5s to the 3s and the 4s. Coming up now is Medhali Redkar of Maharashtra. She has done well in the first with the forward 1.5 somersault, with a few 6s and 1 6.5. She's now attempting the inward 1.5 somersault. Also watch the entry, the point in the dive, where she will make contact with the water. The entry has to occur, the feet first or the head first, with the ideal entry being with the body nearly vertically straight. Watch the feet there together and the toes pointed. The less splash created on entry, the better it is. Has she done that? She's got there. She's got there. This girl is definitely amongst the top 2 at this point of time. Mridula, back 1.5 somersault. So it is Medhali Redkar going to push Rutika Sriram and Ashna Chevli. And for the uninitiated, we'll talk also of how the scoring works in diving. They are awarded out of 10 by each of the judges. In the Olympic Games, there are 7 judges who each score a dive based on the 4 elements of approach, takeoff, execution and entry. Is this good enough? Not so good. Nevertheless, she's picked up the 3s with 1 3.5. Coming up now, the girl from Madhya Pradesh, Bhavika Pingle, attempting the reverse 1.5 somersault. And as I said, the element of approach, the takeoff, the execution and the entry into the water are very, very critical. It's customary to have 5 judges, which we have out here, and each dive considered without regard to the degree of difficulty of this dive, taken into account later by the tariff. What I like about this competition is that each of the divers gets a fair applause. The splash not good enough, creating a fair bit of ripples. Sneha Paul of Bengal,
in the fives. She's attempting the inward 1.5 somersault. So this is diver number 8 here, round 2 of the women's 1 meter springboard. Coming to you from the wonderful Sardar Vallabhbhai Patel swimming pool in Rajkot. Takes her time. Well, the trajectory not good. She's been in the 5.5s, but she's now slipped down from the 5s to the 4.5s, and the splash once again there. Watch out for this girl now. The second of the girls from Maharashtra, with Medhali Redkar in the lead at this point of time. Will Rutika Sriram pick up one more? She's picked up one when we saw her in action in the high board, as also the earlier, which was the 3 meter springboard. Remember, tomorrow is Air Force Day, 8th of October, and this girl went up into the skies like the Surya Kiran team, and yes, there she is. There she is with the 5.5s and 2 6.5s. Gets her back. And the last of the divers in this, the second round, is Palak Sharma with the back 1.5 somersault. 10 of them competing for that exclusive gold medal in this, the 1 meter springboard for women. Don't talk is what she must be telling herself. Don't talk, she must be telling us as well. Now the last of them in round 2, as Bharat Sachdeva will join me out here, but not good enough amongst the threes with 1-4. Bharat, 3 more to go. Where do you put your thumb at this point of time? Well, first of all, good morning Milan, good morning Kulwinder, and good morning all the viewers on DD Sports, as we are witnessing women's 1 meter springboard diving competition, and we are into the third round of 1 meter springboard diving, with Rutuja Pawar of Karnataka attempting reverse dive in A position. Nice clean takeoff, and as Milan was saying, in the Air Force Day, you could see that flight, you could see that opening of the arms, and how she landed with that like a fighter jet coming in, taking that landing. Beautiful, beautiful flight, and a nice clean entry with minimum splash, and that's what judges look for. Next diver in the reckoning from Karnataka, Shakanya Rao, attempting her third dive back, 1.5 somersault. Taking her time, keeping her focus, allowing that momentum to take her, spring off the board. And there you could see not a very convincing takeoff. It was quite abrupt for her standards. And these are the things that the referees look for: the takeoff, flight, the jump, and the position in the air. And concluding with a clean entry in the water. Was a bit too far away from the board too. Next diver from Gujarat, Ashna Chevli, attempting forward double somersault in C position. And as Kulwinder was sharing how divers use different positions to attempt the dive, C position is basically where the diver brings the knees towards the chest and attempting the revolutions. So it's basically a bit more easier compared to the other positions. And again, with that, the degree of difficulty of the dive also gets lesser.
So as the complexity of the dive goes up, so does the degree of difficulty, which is a critical component in deciding the tally, the total tally that the diver will get from the dive. Out of 5 judges, the middle 3 stays intact, gets multiplied by the degree of difficulty. And that was a good attempt forward double somersault by the local Gujarat girl, Ashna Chevli. There you could see, nice landing, moving, taking those revolutions, getting the arm to the side and entering without much splash. Next diver from Bengal, Ipsita Mahajan, firm contender to be in the top 3. Let's see what she has in store, attempting back 1.5 somersault in C position. Ipsita Mahajan. A bit short upon the entry, a bit too short upon the entry. Ipsita Mahajan, as you see that replay, you see that she takes off pretty well, but the revolution in the air was a bit too slow, and as she lands in the water, you see opening a bit too earlier, and the legs are falling apart. The degree at which the diver needs to enter was not maintained, the trajectory which Milind has often spoken about. The next diver from Maharashtra, Medhali Redkar, attempting back 1.5 somersault in C position. Nice takeoff, nice rotation in the air, but landing a little too late with the legs going over. If you see the recap, see the opening happen, the legs fell a bit too far. In the previous dive it fell short, in this dive it fell a little over, so the entry didn't go really clean as was expected from Medhali. Next diver from Tamil Nadu, Mridula, attempting reverse dive in A position. Kept it simple, kept it easy, basic, a bit too short, got a little twisted towards the end. A decent attempt, and that reflects in the score of the judges. Next diver, Bhavika Pingle from Madhya Pradesh, attempting inward 1.5 somersault. Bhavika Pingle attempting her third dive, inward 1.5 somersault. Taking her time, bringing her composure, allowing that timing for the takeoff. As you see, keeping her arms wide open, waiting for that moment, the timing of the jump, and it is an attempt by Bhavika Pingle of Madhya Pradesh. There you go. And the timing, the scoring was just projecting the diver's attempt. Next diver from Bengal, Sneha Paul, attempting reverse dive in A position. Again, as we were discussing earlier, people who have just joined us or watching diving for the first time, it is a sport that involves a lot of technique, coordination, and that was a good attempt by Sneha Paul from Bengal. Nice clean entry, and that's what the judges have awarded for that attempt. And as I was saying, a lot of coordination, balance, awareness in the air, and the speed at which the diver maneuvers through that twist or the somersault will finally show that
how the diver has performed. Next diver from Maharashtra, Rutika Sriram, former champion in 3 meters, current national champion, and attempted her forward 2.5 somersault. We'll wait and watch what does the judges have in store. You could see how she is moving in the air, lands a bit short upon entry, as you could see, too early, and the leg were not going up, right up over her body, so a bit too short on there. Last diver of 3rd round, Palak Sharma from Madhya Pradesh. Reverse 1.5 somersault. Nice attempt. Good dive. And you could see that coming from the crowd, the cheer she garnered. Let's look at the recap and see how she took off. The movement in the air and the beautiful entry kept stretched her body right throughout. And now I'm joined by my fellow commentator, Kulwinder. Kulwinder, welcome back. थैंक यू, धन्यवाद भारत सचदेवा। राउंड 4 में सबसे पहले ऋतुजा पवार, कर्नाटक की इनवर्ड 1.5 समरसॉल्ट, सी पोजीशन, जिसमें टक पोजीशन रहती है। तैयार आपकी स्क्रीन के ऊपर ऋतुजा पवार। स्प्रिंग लेती हुई, जंप लेती हुई, अच्छा था, अच्छा डाइव था। ये देखिए किस तरीके से जंप लिया, घुटनों को मोड़ा, और एंट्री जो थी वाटर में वो शकन्या राव। फॉरवर्ड डाइव 1.5 ट्विस्ट, फॉरवर्ड डाइव होगी, आधी कलाबाजी खानी होगी, उसके बाद ट्विस्ट लेना होगा। इसमें जजेज देखते हैं डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या होती है। 5 जजेज होते हैं, पांचों अपने अपने अंक देते हैं। जिसने सबसे कम अंक दिए होते हैं, जिसने सबसे ज्यादा अंक दिए होते हैं, उन अंकों को हटा दिया जाता है। बाकी बचे 3 जजेस के अंकों को जोड़ा जाता है और उसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को मल्टीप्लाई किया जाता है। यह है शकन्या राव, बिल्कुल ट्विस्ट किया हाफ समरसॉल्ट के साथ। शकन्या राव आपकी स्क्रीन पर 5.5, 5, 5, 4, 3.5। तो फिर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी देखा जाता है। आशना चेवली गुजरात की हैं, ये बैक 1.5 समरसॉल्ट, आशना चेवली ऑफ गुजरात। बैक तरनताल की तरफ अपनी पीठ करके बिल्कुल स्प्रिंग बोर्ड पर किनारे पर खड़े होने की कोशिश करती हुई, एक पैर आगे एक पीछे आप देख रहे हैं। संतुलन बनाना पड़ता है, दोनों बाजुओं को हवा में लहराया। आशना चेवली स्थानीय गर्ल गुजरात की, बैक 1.5 समरसॉल्ट, 1.5 कलाबाजी खानी है इनको बैक पोजीशन से। स्प्रिंग ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं, फलक्रम को जो एडजस्ट किया जाता है उन्होंने नहीं किया, लेकिन जब टेक ऑफ करेंगी बिल्कुल खूबसूरत एंट्री, लैंडिंग अच्छी रही पानी के अंदर। ये देखिए किस तरीके से, बहुत बढ़िया। 5.5, 5, 5.5, 5, 5, यानी कि 5 से ऊपर ही अंक मिले हैं। ये देखिए किस तरीके से घुटनों को मोड़ा, पैर दोनों जुड़े हुए थे। जब आप लैंड करते हैं दोनों पांव जुड़े होने चाहिए। नेक्स्ट है राउंड 4 में स्पिता महाजन ऑफ बंगाल, फॉरवर्ड डाइव 1.5 ट्विस्ट। देखने में ये आसान लगती है, लेकिन आपको फॉरवर्ड डाइव लगाना है और आधा ट्विस्ट करना है, पूरा ट्विस्ट नहीं करना है। स्पिता महाजन जिन्हें कि पहले राउंड में 5, 5.5, 5.5, 5.5 और 5 अंक मिले थे,
जो उन्होंने पहला राउंड लगाया था। और अब चौथे राउंड में देखना है कितने अंक हासिल कर पाएंगे। थोड़ा ट्विस्ट किया इन्होंने, हाफ ट्विस्ट किया, लैंडिंग ठीक ठाक थी। ये देखिए जंप लिया, 4.5, थोड़ा सा ट्विस्ट कर गई, अंक 3 और 4 के बीच में रहे। ये देखिए किस तरीके से थोड़ा सा बैंड करी, पैर जुड़े हुए नहीं थे। मेधाली रेडकर महाराष्ट्र की, जिन्होंने सबसे पहले जब उन्होंने पहले राउंड में लगाया था बहुत अच्छे अंक मिले थे, 6, 6, 6.5, 6 और 5.5। 10 में से अंक दिए जाते हैं जजेस के द्वारा। और आज के जजेज हैं कुंज किशोर मेलम, सागर काकड़, ऋषिकेश गुलापाली, निशित दीक्षित और टी शिव प्रसाद। मेधाली रेडकर महाराष्ट्र की टक्कर देती हुई रुतिका श्रीराम को। बहुत अच्छी एंट्री, ब्यूटीफुल जंप किया, रिवर्स 1.5 समरसॉल्ट था, 1.5 कलाबाजी खाई। अच्छे अंक 6, 6, 6.5, 6 और 6। पिछली बार आखिरी में 5.5 मिले थे, बाकी सेम नंबर मिले हैं और इस बार आखिरी में भी 6 मिले हैं। तो ये लीड कर रही है इस वक्त मेधाली रेडकर। अब मृदुला तमिलनाडु की आपकी स्क्रीन पर तैयार, इनवर्ड समरसॉल्ट, जब पानी के अंदर लैंड करते हैं आप देख रहे हैं वहां एक पानी की धार बहती है, लगातार बाहर से अंदर इस तरनताल में आती है। वो पानी का जो इंपैक्ट उसको सॉफ्ट करने के लिए होती है। तैयार इस समय मृदुला ऑफ तमिलनाडु, इनवर्ड समरसॉल्ट। इन्होंने डाइव लगाई, 4.5, 5, 4.5, ठीक ठाक ये डाइव थी, सीधे पानी के अंदर पैरों के सहारे गई। भविका पिंगले ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरवर्ड डाइव 1.5 ट्विस्ट। पहली डाइव में उन्होंने ज्यादा अच्छे अंक नहीं मिले थे, 3, 4.5, 4, 4 और 4.5। यहां इनके सामने दबाव होगा कि अब थोड़ा सा उसमें सुधार करें। भाविका पिंगले ऑफ मध्य प्रदेश तैयार आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमारे पीछे वाटर पोलो का मुकाबला चलता हुआ, ये ट्विस्ट किया, सीधी पानी के अंदर लैंड किया, थोड़ा सा ट्विस्ट करना था, ठीक ठाक इसको कहा जाएगा अंक 4, 5, 4.5, 5, 4.5, ठीक ठाक डाइव इसे कहा जाएगा। महिलाओं की 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड का यह मुकाबला श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्विमिंग पूल राजकोट में 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत। और स्नेहा पॉल ऑफ बंगाल, फॉरवर्ड डाइव 1.5 ट्विस्ट, ए पोजीशन। बिल्कुल ट्विस्ट किया उन्होंने, फॉरवर्ड डाइव था, 1.5 ट्विस्ट था। 3, 4, थोड़ा से बैंड कर गई एंट्री के वक्त, ज्यादा अच्छे अंक नहीं कहे जाएंगे। रुतिका श्रीराम जो पिछले डाइव में ज्यादा अच्छे अंक हासिल नहीं कर सकी थी, रुतिका श्रीराम फॉरवर्ड 1.5 समरसॉल्ट 1 ट्विस्ट, यानी कि 2.5 कलाबाजियां खाने के बाद एक ट्विस्ट भी उनको लेना होगा। फॉरवर्ड पोजीशन पे है महाराष्ट्र की रुतिका श्रीराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1.5 समरसॉल्ट के साथ। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो थी 2.2 और एक ट्विस्ट। लेकिन अभी तक जो लीड कर रही हैं वो मेधाली रेडकर है। आखिरी आज के 10वीं प्रतिभागी पलक शर्मा मध्य प्रदेश की, राउंड 4 में इन्वॉल्व 1.5 समरसॉल्ट सी पोजीशन पर। सी पोजीशन जिसमें घुटने को मोड़कर रखना होता है अपने चेस्ट के साथ। पलक शर्मा ऑफ मध्य प्रदेश तैयार आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्प्रिंग लेती हुई बोर्ड से। आप जितना ज्यादा
अपने आप को स्प्रिंग से ऊपर की तरफ ले जाएंगे उतनी डाइव आपकी अच्छी रहेगी। अपने आप को संयमित करना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा ये पलक शर्मा का डाइव कहा जाएगा। फॉरवर्ड इनवर्ड 1.5 समरसॉल्ट था। 1.5 इन्होंने कलाबाजी के 5, 5.5, 5.5, 6 और 5.5। और अब जबकि आखिरी राउंड तैयार है, माइक्रोफोन पर अंग्रेजी में मेरे साथी इस समय भरत सचदेवा। Thank you, Kulwinder. Moving to the next diver for the fourth is Rutuja Pawar of Karnataka. Forward half twist, not a very convincing attempt. If you see in the recap, she didn't keep that alignment. The stretch in her legs went off a bit bent, and that is why she lost that point in the last round. Next diver from Karnataka is Shakanya Rao. Inward 1.5 somersault in C position. Shakanya Rao. Last attempt by Shakanya Rao of Karnataka. Inward 1.5 somersault. Taking her time, ensuring that timing for the takeoff, and a decent attempt, last attempt of her dives, Shakanya Rao of Karnataka, and a decent score too, with the average being 4. Next diver, Ashna Chaveli of Gujarat, attempting inward 1.5 somersault in C position. The local lad from Gujarat, Ashna Chaveli. And Kulwinder, welcome back. Kulwinder, as we were discussing, so many things go into making a successful dive, right from the takeoff to the position, alignment, control, awareness in the air to the finishing of the entry. डाइवर को कितनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, फलक्रम को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ आपको स्प्रिंग लेना है, आपको एकदम जंप लेना है, संतुलित होकर आपको दोनों बाजू और दोनों पैरों को जोड़ कर रखना है। Absolutely, and that's why, you could see the numbers coming for Ashna. Decent number, stayed in the mid-range. Next diver, Ipsita Mahajan of Bengal. इसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी देखी जाती है। जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि 5 जजेज होते हैं, सबसे कम और सबसे ज्यादा अंक हटा दिए जाते हैं, बाकी तीनों के अंकों को जोड़कर और उसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी से मल्टीप्लाई किया जाता है। Absolutely, absolutely, and that's Ipsita Mahajan, one of the favorites for this event so far. Kulwinder, she has attempted all the dives with grace, success. That's the last attempt and a clean entry. You could see that. What a beautiful dive. Kept it simple, stick to the basics and finished. सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जो बेसिक्स हैं उस पर रहिए, अपने आप पर नियंत्रण रखिए, संतुलित रखिए, शांति बनाए रखें और इत्मीनान के साथ जब आपको लगे कि हाँ अब आप तैयार हैं तब आपको डाइव करना है। मेधाली रेडकर इस समय महाराष्ट्र की। Attempting back somersault with 1.5 twist in D position. Now positions, as we were discussing earlier, if you are uninitiated into diving, it's a free position. A diver is free to choose or combine 2 different positions to create that attempt. और उसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी शामिल हो जाती है जब आप बार बार तीनों चीजों को आप मिश्रित करने की कोशिश करते हैं। Automatically the degree of difficulty, as Kulwinder rightly said, goes up, and there you could see that attempt. Very good movement in the air, Kulwinder, but landing was just a bit off. पानी में आप जब एंट्री लेते हैं उस वक्त आपकी एंट्री कैसी है, पानी में कितना छपाक होता है, स्प्लैश होता है, पानी कितना उछलता है,
इस पर बहुत निर्भर करता है. कम से कम पानी उछलना चाहिए. मृदुला ऑफ तमिलनाडु attempting her last dive, back dive with half twist. Simple dive, but requires diver to finish in with grace. Let us see what this diver has in store for her last attempt. Mridula from Tamil Nadu. Kept it simple, stayed with the basics, and a fine attempt by Mridula from Tamil Nadu. और मृदुला के बाद अब मध्य प्रदेश की भविका पिंगले. ये देखिए किस तरीके से बहुत बढ़िया डाइव था, लेकिन अब पानी में एंट्री के वक्त थोड़ा सा आप ट्विस्ट कर गए. भविका पिंगले 103B. Bhavika Pingle from Madhya Pradesh. Attempting forward 1.5 somersault in B position. Keeping her attentiveness, keeping her focus, taking her time for that jump, for the takeoff. A bit too short, I would say. Kulwinder, she could have taken the big jump. The spring was still missing, and I think that's where the dive gets determined in the beginning. And the numbers speak the whole story. जब आप जंप लेते हैं, स्प्रिंग लेते हैं, जितना ऊपर जाते हैं उतना ही आप अपने शरीर को एडजस्ट कर सकते हैं. वो ज़्यादा अच्छी डाइव मानी जाती है. और अगर आप शॉट लेते हैं तो दिक्कत आती है. स्नेहा पॉल ऑफ बंगाल नंबर 8 पर इस समय तैयार है. बैक 1.5 somersault. Sneha so far has displayed fine dives, and with her last attempt, let's see if she can continue doing that. And a good attempt, a bit too much splash at the entry, but nonetheless, that was a brave attempt by this young girl from Bengal, Sneha Paul. ये देखिए किस तरीके से, लेकिन पानी में जो स्प्लैश ज्यादा आया है वो शायद इनके अगेंस्ट जाएगा. And the next diver, the second last diver of this women's 1 meter springboard diving, the favorite for this event, Rutika Sriram from Maharashtra, attempting back 1.5 somersault in C position. इनको अब बहुत सही डाइव लगानी पड़ेगी क्योंकि मेधाली रेडकर के साथ इनका मुकाबला है. Preparing herself, taking that position right at the edge of the board. Kulwinder, this requires a lot of balance like a ballerina. This reminds me of how the dancers, the ballerinas are performing at the stage, and that's what the divers do. But here, they have to create different complexities, and there you could see fine dive by this amazing athlete, mother of two from Maharashtra, going strong. A little over, if you see the attempt, slightly she went over, the legs fell overhead, didn't get the alignment. बिल्कुल सही कहा आपने. और 3 राष्ट्रीय खेलों में पहले भाग ले चुकी हैं और इन्होंने बताया इंटरव्यू में कि मदर बनने के बाद ये पहली बार भाग ले रही है. पलक शर्मा इस समय और फॉरवर्ड 1.5 somersault 1 twist के साथ. तो यहाँ पर ये 5वें राउंड की आखिरी प्रतिभागी पलक शर्मा ऑफ मध्य प्रदेश. That will be, let's wait what the referees will award that. And referee decided to continue with that attempt. Forward 1.5 somersault with 1 twist. She had a bit of a hiccup in the first attempt, but then she quickly went back, and a good attempt by Palak Sharma from Madhya Pradesh. You could see the twist, the movement in the air, and that finishes 1 meter diving competition for the women. Wonderful attempt by the diver. Kulwinder, what a great show. What's your thoughts on that? और डाइविंग के जो ये मुकाबले हैं स्प्रिंग बोर्ड पर या आप
10 मीटर कह लीजिए, 5 मीटर, 1 मीटर, ये आज आखिरी मुकाबले हैं। आज ये सभी मुकाबले समाप्त हो जाएंगे जो कि डाइविंग के हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो आज का मुकाबला था, 10 प्रतिभागी थे। रुतिजा पवार, शक्कन्या राव, आशना चेवली, स्मिता महाजन, मेधाली रेडकर, मृदुला, भाविका पिंगले, स्नेहा पॉल, रुतिका श्रीराम और पलक शर्मा। तो डाइविंग के इन मुकाबलों में आज महिलाओं की 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स, राजकोट। और अभी आपने स्क्रीन पे देखा जो पीछे वाटर पोलो का मुकाबला चल रहा है, उसके दृश्य आप देख रहे थे। तीनों ही मुकाबले यही इन 2 तरनताल में हो रहे हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे जिसमें वाटर पोलो चल रहा है, इसी में शाम के वक्त स्विमिंग के मुकाबले होते हैं। और जो हमारे सामने तरनताल है, ये छोटा है, इसमें डाइविंग के मुकाबले होते हैं। 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 7.5 मीटर और 10 मीटर। और चारों तरफ भरत पानी इतना उछलता आगे पीछे से कि अगर कोई कमेंटेटर नहा कर नहीं भी आया हो तो भी काम चल सकता है। Well, we are getting the cues now from you, Kulwinder. I can understand. सभी के लिए You want to take a shower at the pool, but yeah, there you could see happy faces, feeling content with their attempts. And as we await the final verdict of the referee of the match of the diving competition, let's see who will be the winner of 1 meter springboard diving for women. ये देखिए श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्विमिंग पूल का शॉट। बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल है। और यहाँ हम बार बार कहते हैं कि डाइविंग के मुकाबलों में यहाँ 5 जजेज होते हैं, ओलंपिक में 7 जजेज होते हैं, लेकिन ओलंपिक में डाइविंग नहीं होती, सिंक्रोनाइज स्विमिंग होती है, वो 1 मीटर डाइविंग नहीं होती। आप खुद बहुत अच्छे डाइवर रहे हैं और ये जजेज जो कि फाइनल रिजल्ट बनाते हुए, कंपाइल करते हुए, क्या खूबसूरत विहंगम दृश्य है। दोनों ही तरनताल एक साथ एक ही शॉट में। Gulwinder, I would love to ask you, where do you get these? Someone out here who's been at diving for a long time, Gopi Malpedi, comes from the wonderful city of Sholapur. और अब चलते हैं मिलिंद वागले के पास जो कि इंटरव्यू के लिए तैयार है। So yes, Sholapur, the place which is known for its chaddars or bed sheets, and he comes from that wonderful place, Gopi Malpedi. Gopi, tell me, you've been with diving for many years, 40 years, gosh, 40 years at diving. Tell me the transition of diving 40 years ago and what it is today. Today we are having very good infrastructures from all over the India for diving, and this time Gujarat government has did a good job conducting this national games. With this, sportsmen will encourage for their every events and to achieve in future also in many big competitions. The level of competition, both in the men and the women over these 40 years, how has it grown in these 4 decades? In these 4 decades, the diving has been changed more and more, because in our days we used to do only up to 3.5, only 2.5 somersault in only just in forward groups. Nowadays these boys are players are doing in all groups, like forward 3.5, 4.5 they are also doing from ASI, and in back 3.5, inward 3.5, reverse 3.5. So many difficult dives we are performing nowadays with the support of our Swimming Federation of India, and Mayur sir is also with us, Kamlesh Nanavati sir is there, and Virendra Bhai Nanavati is also will support for diving lot. And which is the state, or which are the states which are doing well, so that the others also start doing well like these states?
from last 4 decades, Maharashtra is doing now number one. From my childhood, I'm looking Maharashtra is doing good. After that, we'll get Madhya Pradesh is a number one, where Ramesh Vassar is coaching there. He's a very senior coach. Plus, also we are having Karnataka, Goa, and West Bengal is also doing good divers from their state. And all are now some states are there like Assam, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, where there is no divers at all. What do you think should be then done to encourage diving? To encourage diving, we have to explore in that states, to go there and conduct some camps on behalf of our state growth of diving. We have to conduct many competitions in that states. You know, when you look at the world scene, we all know China and Asia is doing very well. What, according to you, is the reason? The reason is that their infrastructure is very high, and from the childhood they are performing from grassroots for that kids. From in India, we are just started now. Like Army Sports Institute is doing good in their field for diving, and we are getting a lot of support from Army Sports Institute. Like that, we are having more Army Sports Institute having more infrastructures to perform divers good. Well, I'll tell you something. 40 years is what Gopi has been at this sport. The likes of him, Mayur Vyas and so many of the others continue to do yeoman service as far as diving is concerned. Remember, it's not only the divers, it's the officials like them who make an impact as far as the sport is concerned. We'll go back to our commentary team for a moment, Bharat Sachdeva, but we'll come back again to talk to the winner of the 1 meter springboard diving. That was a wonderful interview with Gopi, the former national champion. And there you could see fantastic shot of diving pool with the diving board gracing with the National Games board. That's a bird's eye view of the majestic diving pool. And what a performance that has been by this brave hearts. Fantastic champions representing the sport of diving for their respective states. And Medhali Redkar from Maharashtra has been adjudged the winner of this competition. 1 meter springboard diving contest at 36th National Games in Rajkot, Gujarat. Now you could see in the background that big air balloon gracing, representing the spirit of Judega India, Tabhi Aage Badhega India. What a message. If we will all be together, only then we can prevail and be victorious. Judega India, Jeetega India is the message gracing the skies of Rajkot. That's what we need, the unity in diversity, and only then we can progress. We all move together. There you could see water polo matches underway at the moment, moving into the last stages. There will be some exciting finals happening tomorrow, which we will be bringing you live. Okay, over to Melin Wagle, who will be interviewing the winner. 45 minutes by my watch, and it was all over. 5 rounds, 10 divers, and this girl came up as the gold medal winner, Medhali Redkar. She comes from the wonderful city where I come from, which is Mumbai. Medhali, you got a smile, small little smile on your face. I'm sure as the day progresses, it will start dawning on you that I've got the gold medal, and the smile will increase. Yeah, I'm pretty sure. It takes some time, but I was planning, I was practicing to get the gold medal, to do my best, and obviously it will take some time for it to dawn, but I'm sure by the evening it will happen. Tell me, you started off well with a few sixes and 6.5. Did that build confidence in you?
Yes, definitely. The first few dives are important, yes. So if first few, matlab 1-2 dives go like 6-6.5, then it does boost your confidence. And the earlier 3-meter springboard, and these were two events which actually were again taken by a Mumbai girl, Rutika Sriram. Did that sort of inspire you to say, if she can do it, why can't I do it? Well, Rutika Didi has set like an impossible benchmark for the female divers, and she obviously does her very best, and she does inspire me to do better. Yes. You come from Mumbai, which has such a huge legacy in swimming. Swimming, water polo, Maharashtra has done well, and diving also. Tell us your practice regime day. How do you take time off from your professional activity, which is physiotherapy? Yeah. So it gets a bit difficult, yes, but you have to take time for something that you love. So in the evening I do my training, and it is divided into strength training and technical training, pool training. So accordingly throughout the season it just changes a bit. We do some changes, and then so the pre-competition season is a bit hectic, yes. Do you have the advantage of being a physiotherapist and a diver? Yes, it puts me in a certain advantage, yes. I do know certain biomechanical things and physical things about the board, about the body, that helps me do better dives. Well, I'll tell you something. This girl is not very tall. She stands, I think, at 5 feet 4 inches, 5 feet 2 inches. But I keep on saying this, that these short girls and short boys do a lot of tall things out there in the pool. We here would like to wish Medhali Redkar the very best, and we hope that she goes on and climbs ladder after ladder to the pinnacle, perhaps to the top. Ambassadors of this wonderful country, India. Back to Bharat Sachdeva for the commentary. There you could see, just finished the interview with the winner, Medhali Redkar of Maharashtra, winning with a convincing margin and upsetting the favorite Rutika Sriram. And interestingly, the second position has gone to Ashna Chevli of Gujarat, the local girl who has given one silver medal in the kitty of her home state, and the first medal in diving for Gujarat. What a convincing performance that was. And there you could see some of the replays. Fantastic performances by the divers in 1 meter springboard diving. Nice attempt. That was for you, the winner, Medhali Redkar, displaying her prowess. Some of the attempts by multiple divers. Look at that twist with 1.5, with one somersault from Rutika Sriram. That's the next diver, Palak Sharma. Excellent performances, excellent display of talent, prowess, and multiple complexities that the diver has to demonstrate as they attempt various dives. That's beautiful dive by Palak Sharma, inward 1.5 somersault in C position. And there you could see display of the diving pool gracing with the 10 meter platform. And today was the last day of our diving contest, and what a finale this has been to the diving competition at the 36th National Games, with 36 states and union territories and 36 sports. So what a number this games has come up with, 36. And it's good to see all the states and union territories representing their respective states and participating at this mega event, bringing in their culture, their talents, their values, and the work that has gone into making up the champions. You could see the water polo competition underway. We are in the second last day of a water polo competition, and
soon we will be seeing our fellow commentator Kulvinder interviewing Ashna Chevli, the local lad from Gujarat, finishing second in 1 meter springboard diving. एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग और मेरे साथ हैं आशना चेवली, जिन्होंने कि रजत पदक जीता है। आशना, बहुत डिफरेंस है 171.50 मेधाली रेडकर का और आपके जो अंक है 148.30। क्या कारण मानती हैं, इतना अंतर कैसे रहा? मेरी प्रैक्टिस अभी बहुत कम हुई थी इस गेम के लिए, तो आई थिंक दैट्स द रीज़न। बस यही है। ये रीजन है। आप बहुत डायमेंशनल है, आप पेंटिंग भी करते हैं सुना है, आप वाइल्ड लाइफ भी करते हैं, सब करते हैं। क्या क्या तैराकी के अलावा आप क्या करते हैं डाइविंग के अलावा? डाइविंग के अलावा मैं पेंटिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, रीडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है मेरा, और अभी आर्किटेक्चर डिप्लोमा कर रही हूँ। आर्किटेक्चर डिप्लोमा, तो क्या आर्किटेक्चर तो आपके इसमें आर्ट में जो आपकी डाइविंग की आर्ट है उसमें उससे कुछ मदद मिलती है? आई थिंक सब कुछ कहीं ना कहीं ओवरलैप होता ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो एक चीज़ में होती है तो दूसरे में काम आती है। तो आई थिंक आर्किटेक्चर में भी जो हम लोग पर्सपेक्टिव वगैरह सीखते हैं तो कहीं पे आ जाता है, हमारे डाइविंग में भी यूज़ हो जाता है। आप सूरत की रहने वाली हैं और सूरत में तो बहुत डायमंड होते हैं और आप भी भारतीय तैराकी का भविष्य के डायमंड होंगे, लेकिन ये जो 4-5 चीजें ये इनमें आप सब तरफ ध्यान देती हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो डाइविंग है, स्विमिंग है, इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? कैसे आप तालमेल बिठाती हैं दोनों में? क्योंकि मेरे सारी चीज़ें अलग नहीं है। कभी कभी ऐसा रहता है कि मैं डाइविंग के लिए प्रैक्टिस करती हूँ तो करती हूँ कि ये मेरे डाइविंग में काम आएगा। तो ऐसे सारी चीज़ें कहीं पे रही हूँ। आपके कोच कौन है? अभी तो खुद प्रैक्टिस की है हमने। अच्छा, अभी आपने खुद प्रैक्टिस करी है सिल्वर मेडल। आपके फैमिली का कितना कोऑपरेशन आपको मिलता है? मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रहती है। प्रैक्टिस गुजरात में लोकली अवेलेबल नहीं होती है हर वक्त, तो हम लोग बाहर ही जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो मम्मी हमेशा साथ रहती है। तो आप सूरत में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ फैसिलिटी है आपको इस तरह की? सूरत में डाइविंग बोर्ड पे बोर्ड्स नहीं है, स्प्रिंग बोर्ड्स नहीं है, तो सूरत में प्रैक्टिस नहीं होती हमारी, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग और डाइविंग बोर्ड नहीं है। तो फिर क्या आप वीडियो देखती हैं या कैसे इसको अपने आप को अपडेट रखती हैं? अभी इस बार हमने प्रैक्टिस की तो मैं डाइव करती हूँ, मम्मी वीडियो करती है और उस डाइव को देख के मैं करेक्शन। ये थी आशना चेवली, जिन्होंने की रजत पदक जीता गुजरात की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि इनको प्रैक्टिस के लिए भी मिले, डाइविंग भी मिले सूरत में, और ये हीरे की तरह तराश कर अपने आप को एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में जाए। तो चलते हैं, अब आपको कमेंट्री बॉक्स लेकर चलते हैं। And that was the local lad from Gujarat, Ashna Chevli, sharing her perspective, share his experience with our fellow commentator Kulvinder. And there you could see some of the recap of the 1 meter springboard diving on the final day of diving at this majestic aquatic complex in Rajkot. It has been an event where so many revelations have come out, so many young talents have been discovered, and it is now time for our different organizations, teams, coaches as well as federation to harness this potential, to ensure that these potential don't go waste. They can be channelized, they can be given adequate support, nourishment, nurturing and care, so that these young talents can one day represent the country and make India proud at the international level. We are yet to create any ripples in diving at the international stage, which will be great if we can have someone coming up in the next few years. But like we were just having a conversation with our services coaches yesterday, that all it needs is a right talent scouting
a program that nurtures the young talent and brings these athletes together at the same platform by offering them studies, health, training, all at one place so that we can save time and we can focus on our priorities, which is to nurture a talent for the long term. To our fellow commentator Kulwinder, who will be interviewing Rutika Sriram. स्वागत है एक बार फिर से और मेरे साथ है इस समय रुतिका श्रीराम ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने कि आज कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 11 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। ये 12वां कांस्य पदक मिला है, चेहरे पे इतनी खुशी नहीं है, आपको सोना इकट्ठा करने की आदत पड़ गई? हाँ एग्जैक्टली, आज पहली बार मेरे को ब्रॉन्ज मिला तो फिर मैं नाराज तो नहीं हूँ। आई हैव गिवन माय बेस्ट, बट मेरा दिन नहीं था आज। लेकिन उम्मीद थी कि शुरुआत से आप फेवरेट थी, और कहाँ आपको लगता है कि कहाँ गलती हुई, क्योंकि गुजरात की लड़की भी आपसे ऊपर रही और आप अंक उनसे कम रही? मेरे डाइस में आज जैसा प्रैक्टिस था, मेरे डाइस वैसा आज नहीं कर पाई मैं, तो इसीलिए वो मिस्टेक्स की वजह से पॉइंट से सिल्वर मेडल मेरा। आपके हस्बैंड हरिप्रसाद भी आपके साथ हैं, जो आपके कोच भी हैं, 2011 के राष्ट्रीय खेलों के चैंपियन भी हैं। तो हरिप्रसाद जी, अब अगर ये कांसे की बजाय स्वर्ण आता तो ठीक था, अब ये नहीं आया तो सारा दोष ही आपको देंगे, क्या कारण रहा? आगे आ जाइए। दिन की बात है, थोड़ा सा छोटा हमारे तरफ से भी थोड़ा मिस, यही खेल यही है, तो एक दिन गोल्ड आता है तो एक दिन हारते भी है, यही स्पोर्ट्समैनशिप है, ये इसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स है, इसको और वर्क करके नेक्स्ट टाइम और स्ट्रांग आना है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे और आगे लाना है, और छोटे छोटे मिस्टेक्स होती हैं। क्या ये आपकी बात पूरी तरह से सुनती है ट्रेनिंग के वक्त? सुनते हैं, और घर में भी मुझे सुनना पड़ता है। घर में आपको सुनना पड़ता है, लेकिन अगर मैदान पर ये आपकी बात नहीं सुनेंगी तो फिर स्वर्ण से ये कांसे पे आ जाएंगी। 11 आप इकट्ठे कर चुकी हैं, अब आगे क्या लक्ष्य है? क्योंकि आपने 3 राष्ट्रीय खेलों में भाग लिए एज ए बैचलर, और अब आप इस बार आप एज ए मदर, 2 साल का बेटा भी है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आया है इसमें, और कितना का आप समझते हैं कि आगे टाइमिंग जो आपका कम आया उसको सुधारने के लिए, आगे की जो प्रतियोगिताएं उसके लिए आप कैसे तैयारी करेंगे? आगे आज ये जो कंपटीशन रहा, इसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है, तो मैं यहाँ का एक्सपीरियंस लेके आगे की तैयारी और जोरदार से करूँगी, ताकि मैं मेरा जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको भी मैं गोल्ड में कन्वर्ट करूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं तीनों इवेंट में क्लीन स्वीप 3 गोल्ड जीतूँ, यही मेरा लक्ष्य रहेगा। क्लीन स्वीप करना चाहते हैं आप, पूरा कोशिश करेंगे हरिप्रसाद? ऑफ कोर्स हमारे तरफ से जितना है उतना कोशिश रहेगी, तो बैकअप उतना ही रहेगा, और ज्यादा रहेगा, अभी तो और ज्यादा बैकअप रहेगा और मेहनत रहेगा जी। तो ये थी रुतिका श्रीराम, जिन्होंने कि आज कांस्य पदक जीता, और उनके साथ उनके हस्बैंड हरिप्रसाद, जो स्वयं एक नेशनल चैंपियन है 2011 के एशियन गेम्स के, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। अब चलते हैं हम हमारे कमेंट्री बॉक्स में। And that was Rutika Sriram. Thank you, Kulwinder. That was Rutika Sriram from Maharashtra at 40. What a champion athlete she is. She was there interviewed by Kulwinder along with her husband, who's also her coach. And I think sometimes, the athletes perform better when they have someone close to them offering their coaching time, energy and effort, and that's what we can see in the case of Rutika Sriram.